This is a story about Raja, and Rani two individuals who are going to meet each other for the first and only time. to decide if they will marry each other. Raja was born in Delhi. At a very young age, he was recognized as a child prodigy in the game of Gilli Danda. But his Gilli Danda career came to an abrupt end when one of his gillies crashed through his father's car. Undeterred, Raja then tried his hand at a more advanced sport, cricket. But unfortunately for Raja, this new career choice also ended in the same tragic fashion. And then something happened that would change the rest of his life forever. 15 years later, Raja is now a PhD student in botany, whatever. He became so engrossed in his research that he never had time for girls. हेलो। राजा, कैसे हो बेटा? हम ठीक है पापा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। और आप क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या सिर्फ लड़कियों को ही देख रहे हैं? ओफो, चुप भी करो। क्यों बिगाड़ रहे हो उसको? इतना होनहार बेटा है हमारा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मुझे पता है हमारे राजा को पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है, तो लड़कियाँ क्या देखेगा वो, इसीलिए हमने। बेटा, इसीलिए एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए हमने। क्या? हाँ, लड़की बहुत सुंदर और सुशील है, काफ़ी अच्छे घराने से भी है। हम उसके माता पिता को भी काफ़ी सालों से जानते हैं बेटा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो तुम्हारे शहर में ही रहती है, इसलिए उसे देखने के लिए ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे तुम्हें। अरे चुप रहिए आप, हमेशा पैसे बचाने की ही सोचती है आपको। मैं तो तंग आ गई हूँ। खैर बेटा, हमने उसके पेरेंट्स से सारी बातें कर ली है और वो भी इस रिश्ते से काफ़ी खुश है। सुन रहे हो बेटा? राजा, क्या हुआ, कुछ बोलो भी। पर मम्मी, मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही है। देख तो लो, अगर पसंद ना आए तो मत करना शादी। ठीक है या नहीं? नहीं, मैं नहीं मिलूंगा अभी। देख राजा, उसके पेरेंट्स हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगर तू लड़की से नहीं मिला तो हमारी नाक कट जाएगी। क्या चाहते हो, नाक कट जाए हमारी? नहीं पिताजी, आपकी नाक सही सलामत रहे हजारों साल। शाबाश। रेस्टोरेंट का नाक है, मेरा मतलब नाम है खाना खजाना। और कल रात 8 बजे ज़रूर मिलना उससे। अच्छा। हाँ, और लड़की का नाम रानी है बेटा। हाँ, और डिनर के बाद हमें फ़ोन करना मत भूलना। अच्छा। शुभ रात्रि बेटा, चलो बाय। शुभ रात्रि मॉम। Rani, on the other hand, was born in Bangalore. Blessed with natural beauty, she entered into beauty pageants at an early age. After winning a string of pageants, she embarked on a career in modeling and acting. But fate had another plan for her future. Her face had violent reactions to a facial cream she was modeling, and her modeling and acting career came to a crashing end. Rani locked herself in her room. One night, she happened to cry over an astronomy book. 15 years later, Rani is now a PhD student in astronomy.
Like Raja, Rani also became too involved in her research to pay any attention to romantic overtures from boys all around her. Hey, baby. You want to take a ride in my Civic? Huh? You wanna go out with me? I'll go out with you if you can solve this problem using Schrodinger's equation. Hey, no problem. Why? I'll be right back. Hello? Hi, sweetie. How are you? I'm fine, Mom. How are you and Dad? We both are alive, Rani. But you know, old people like us can die any day. Will you stop saying that? It's true, Rani. See, we just have one last wish. Then we can die in peace. Mom, please stop blackmailing me. Only after you do one thing for us. And what is that? You know, Rani, yesterday we met the priest at the temple and he said that it's a good time for you to get married. So we found a perfect guy for you. What? We know his parents. He is from a good family. And we already have arranged a dinner tomorrow night at a restaurant. Khana? Nahi khana? Khana bajana? Arey Baba, it is Khana Khazana. Are you listening, Rani? Hello? How can I get married to someone I've not even met? Listen, Rani. Nobody is forcing you to get married. Just meet the boy once. If you don't like him, you don't have to see him again. His name is Raja, by the way. Let us know how the meeting goes. Best of luck, Rani. Bye-bye. Bye. Bye, Mom. Bye, Dad. So, what do you think about arranged marriage? हमारे विचार में एक महत्वपूर्ण संस्था है। Oh, really? I think it's a patriarchal institution invented to keep women subjugated. Why are you laughing? तो फिर आप यहाँ इतना सज धज कर किस विचार से आई हैं? Because of my parents. देखिए, हम भी अपने माताजी पिताजी के कहने से ही आए हैं। Oh, good. Then we don't have to put up a charade. Let's just finish this dinner and be done with this. हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। Well, I've heard a lot about this place, but never got a chance to be here. हम तो यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं। Oh, really? How's the food here? सर्वश्रेष्ठ, स्वादिष्ट, शाकाहारी, यूँ कहिए कि सर्वोत्तम। Oh, I understood only the first and the last word in that sentence. आप ज़रूर साउथ इंडिया से हैं। Why do you say that? नहीं, बस लगता है आपको शायद हिंदी नहीं आती। Excuse me? नहीं, क्योंकि साउथ इंडिया में लोगों को ज़्यादा हिंदी नहीं आती और आप भी बस इंग्लिश ही बोल रही हैं। Oh, then you definitely must be a North Indian because apparently you can't speak any English. Look, madam, for information yours, I speak English. Good. I speak Hindi क्योंकि I am Indian. और मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं अमेरिका में है। Waiter. Oh, I'm sorry. maybe you should come back later. Oh, no. I'm ready to order my drink. I'll have Kingfisher, please. क्या आप शराब पीती हैं? No, but it's a good night to start. Madam, we don't serve alcohol here. Oh, okay. I'll take mango juice then. और सर आपके लिए? मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी फालूदा। ऐसे भी अपने यहाँ फालूदा ही बन रहा है। Excuse me? I'm sorry. Do you need subtitles? No.
Okay, I think I'll go get your drinks. I need to go to the restroom. Okay. हे राम, किस मुसीबत में फंस गया मैं? What did I get myself into?